নমস্কার, নিউজ ভ্যানগার্ডের এই মুহূর্তের এই বিশেষ টক শোতে আপনাদের স্বাগত। আজকের এই টক শোতে আমরা আলোচনা করব ইউরিনারি স্টোন ডিজিজ নিয়ে। অবশ্যই আমরা জানি এই ইউরিনারি স্টোন ডিজিজ একটা গুরুতর বিষয় এবং যদি সঠিক সময় চিকিৎসা না করানো হয় আগামী দিনে সামনের দিনে গিয়ে আরো অনেক সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়ায় এই ইউরিনারি স্টোন ডিজিজটা। অবশ্যই আজকে এই বিষয়টা নিয়ে আমরা কথা বলবো এবং আমাদের সঙ্গে আজকে আমরা পেয়ে গেছি ডক্টর এ সন্তোষ কুমার, consultant urologist and andrologist, ILS Hospital. Welcome, Dr. A. Santosh. You are a consultant urologist. So, first of all, thank you for being here. The very first question I want to ask, what is this urinary stone disease? Yeah, namaskar, almost all the people of Tripura. मैं डॉक्टर संतोष है इंट्रोड्यूस फ्रॉम कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट एंड एंड्रोलॉजिस्ट ILS हॉस्पिटल। और यूजुअली आज का टॉपिक है डिस्कशन के लिए यूरिनरी स्टोन डिजीज। ये तो यूरोलॉजी में मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है और ऑलमोस्ट यूरोलॉजी में ऑलमोस्ट 30 to 40% पीपल को ये प्रॉब्लम कभी भी आने के चांस है। सो यूरिनरी स्टोन डिजीज मतलब क्या है? स्टोन किडनी में होने का चांस है और किडनी पेशाब के रास्ते में होने का चांस है और ब्लैडर में होने का चांस है। सो ये तो मोस्ट कॉमनली हर एज ग्रुप में, पीडियाट्रिक एज ग्रुप में और मिडिल एज ग्रुप और सब इवन अडल्ट लोगों को देखने के भी चांस है। सो ये स्टोन डिजीज से क्या है, मतलब वो किडनी खराब होने का चांस है हम नेग्लेक्ट किया तो। और वन मोर थिंग इज ये पेशेंट का सिम्टम ज़्यादा है। उनका मेन थिंग उनको कमर में पेन ऐसे ही होते और पेशाब जाने का मुश्किल हो रहा, पेशाब में खून छिड़ रहा है, ऐसे थोड़ा कंप्लेंट्स रहते। सो इस वजह से हम पेशेंट को काउंसिल करेंगे ऐसे क्यों, कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं और इसके ट्रीटमेंट्स क्या क्या है और इसमें क्या करते हैं हम इसमें। Obviously. So the second thing I want to know from you, how are these urinary stones formed and also why are these formed? ओके, एक्चुअली वो यूरिनरी स्टोन डिजीज फॉर्म होने के लिए ऑलमोस्ट 3 to 4 चांसेस है। और मेन थिंग एक क्या है, वो फेमिलियल डिजीज है, हमारा फैमिली में चल रहा है तो ऑलमोस्ट हर लोगों का आने का चांस है। एंड वन मोर थिंग इज वो हमारा डाइटरी हैबिट्स, हम फिजिकल एक्टिविटीज अच्छा नहीं किया तो भी उस यूरिनरी स्टोन्स फॉर्म होने का चांस है। और हमारा वजन ज़्यादा है तो ये भी एक रिस्क फैक्टर है। एंड वन और हमारा डाइटरी फैक्टर्स में क्या बोला, इसमें पेशेंट कौन लोग नॉन वेजिटेरियन ज़्यादा खाते हैं, उसमें प्रोटीन और फैट फूड, सो इससे रिस्क फैक्टर है। और एक नमक का फूड्स ज़्यादा खाते हैं ना, वो लोगों को भी रिस्क फैक्टर है। एंड वन मोर मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर में सब लोगों के बोलते हैं पानी पीने के लिए। हर लोगों को पानी ऑलमोस्ट डेली 3 to 4 लीटर जरूरी चाहिए, बट ये तो एक ही बार पीना नहीं, क्योंकि हम डिस्ट्रीब्यूट करना और कंटिन्यूसली हाइड्रेट होना, इस वजह से ऑलमोस्ट 50 to 60% हम स्टोन डिजीज फॉर्म होने के लिए कम कर सकते, क्योंकि हर घंटे 1 ग्लास और 2 ग्लास पानी पीना। सो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। वो लोग बाहर क्या काम करते हैं ना, और सन सिटीज में और वेयर दे आर गेटिंग डिहाइड्रेटेड, वो लोग को थोड़ा ज़्यादा चाहिए पानी पीने के लिए। सो दीज फैक्टर्स हम थोड़ा इफ़ वी कैन टेक केयर ना, हम स्टोन डिजीज प्रिवेंट कर सकते। एंड मेन थिंग इज एक बार स्टोन डिजीज आया ना, उनका रिस्क फैक्टर ज़्यादा है, वो बार बार स्टोन आने का रिस्क फैक्टर ज़्यादा है, वो तो दोज पीपल शुड बी स्टिल केयरफुल। You mentioned obesity or weight is a factor. Yeah. So, if you look into today's world, many people are working from home. Yes. The amount of exercise they are doing is not enough. Yeah. So, as a result, they are getting fatty. So, is that a big factor for getting urinary stones? And what are the also, if you mentioned the food habits, if you could please elaborate on the food habits as well. Okay. So main thing is physical activity. Why I stress on that is actually your physical activity से not only stone disease, our overall health will be very perfect if you are going to maintain that our physical activity. क्योंकि हमारा फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा नहीं है तो हमारा मेटाबॉलिक एक्टिविटी कम हो जाते। सो मेटाबॉलिक एक्टिविटी कम होने से हमारा बॉडी में थोड़ा वो स्टेबिलिटी, फिजिकल स्टेबिलिटी वो सब रहते ना, इट विल बी कम्प्लीटली ऑल्टर्ड। सो क्योंकि वो थोड़ा लोग क्या बोलते हैं, वो पेशाब ज़्यादा रुक जाते हैं, क्योंकि वो स्कूल्स में छोटे छोटे बच्चे रहते हैं ना, वो बाहर पेशाब जाने के लिए थोड़ा दे फील एशेम। सो ये अच्छा नहीं है। सो उस लोगों को मैं बार बार पूछते, कभी भी ऑलमोस्ट यूरिन तो रुकना नहीं। एंड वन मोर फैक्टर रिगार्डिंग डाइट, मैंने क्या बोला, इसमें सॉल्ट रहते हैं ना, सॉल्ट फूड क्या क्या है, हम लोग ऑलमोस्ट
what are the dietary foods we are getting? Ready-made foods nowadays almost all are processed foods. उसमें salt ज़्यादा ऐड करते हैं क्योंकि वो प्रिजर्व ज़्यादा दिन रहने के लिए. सो प्रिजर्वेटिव फूड्स बोलते हैं ना, इसमें ज़्यादा रिस्क है हमारा स्टोन्स फॉर्म होने के लिए. और एक क्या है, प्रोटीन फूड. हाई प्रोटीन फूड खाए तो सम लोग बोलते हैं nowadays people are got habituated taking up high proteins continuously. They are keeping concentrating on proteins like high non-vegetarian diet and they are taking so much of nuts and all. Actually क्या क्या बोलते हैं, बादाम, कैशू, वो सब. ये should be taken minimally adequately which are sufficient to our body, but they should not take it continuously because इसमें ज़्यादा minerals वो सब ज़्यादा रहते. So if we are taking balance ना, then we can prevent most of the stone disease. And क्यों चीज़ what we can't avoid is actually हमारा families में, क्योंकि some regions are particularly prone for stone disease where there is high temperatures like some seasonal, some places where there is highly exposure to heat, and by professionally some people are continuously working in hot weather and all. Those people are also high risk people. So for that what we advise is they have to take adequate water sufficient to them to get hydrated regularly. So इस वजह से क्योंकि हमारा पेशाब तो ऑलमोस्ट इट शुड बी एक ही चीज़ है इसमें, व्हाट वी शुड टेक केयर इज एक्चुअली हम कभी भी यूरिन पास करते हैं ना, इट शुड बी वाइट, इट शुड नॉट बी कॉन्सेंट्रेटेड. ये तो वेरी इंपॉर्टेंट चीज विच कैन बी एक्सप्लेन टू ऑलमोस्ट इवन ले पर्सन्स हु कांट अंडरस्टैंड. So that's what I insist on. So you mentioned that you mentioned about the children who don't pass urine when they have the pressure, and later on it could become a problem. The same thing, don't you think, is also a big problem for the ladies people as well, because they can't. Gents can go anywhere in the urinal, but ladies people can't go, and they have to wait for at times hours at times to go. So this is actually the most common what we used to face previously, because most of them are ashamed going to toilets regularly in the school, especially children. They want to hold it actually, and वो ladies रहते हैं ना, वो washrooms अच्छा नहीं है तो if they are not looking fine they will try to hold it. क्योंकि इससे प्रॉब्लम क्या है, हम यूरिन ज़्यादा टाइम रुक जाए तो क्या है, इसमें इन्फेक्शन होने का चांसेस ज़्यादा है. सो इन्फेक्शन से और यूरिनरी स्टोन फॉर्मेशन होने का चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते. सो इन्फेक्शन, स्टोन डिजीज बढ़ने के चांस में क्या प्रॉब्लम है, हमारा यूरिनरी सिस्टम फुल इफेक्ट हो जाते. सो इसके लिए हम बार बार वो पेशेंट्स विथ रेगुलर यूरिनरी इन्फेक्शन को हमारे पास आते हैं ना, वो सबको बताते ये चीज़. डेफिनेटली यूरिन तो नहीं रुकना, आपको यूरिन हो जाए तो इमीडिएटली किधर भी फैसिलिटी हो जाए तो उधर जाके यूरिन पास करना. ये तो वेरी इंपॉर्टेंट नॉट ओनली इवन फॉर चिल्ड्रन एंड लेडीज, इट इज इम्पोर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी एज ग्रुप ऑफ पीपल, because it is very much which we need to counsel in our urological department. But doctor, don't you think that if we go in a unhygienic place, in unhygienic laboratory to pass urine, then also we'll have some problems, or that can be minimized? That actually we have to take care of ourselves. First of all we have to clean our body, then only we can take care of outside situations. But I can understand where situations are not possible, but we can't control over our body activities. So where the facilities are there, we have to take care. And recently, because of the government, whatever, almost each and every government of the states or even central government, they are encouraging on hygienic conditions. So definitely I feel like compared to the last around 8 to 10 years, the hygienic conditions have improved even in schools, public lavatories, everything, almost facilities are being provided each and every place. So I don't think this will be a major factor now. Okay. So the next thing which brings me to the another question, how much common is this urinary stone disease? You mentioned children who stop their urine, they don't pass urine. तो मतलब कितना प्रॉब्लम हो सकता है अगर यही बच्चा कंटिन्यू ये करता रहे, मतलब कितने सालों में ऐसा हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है कि उसको ये यूरिनरी स्टोन डिजीज का मतलब तकलीफ हो सकता है? ऑलमोस्ट हमारा जनरल पॉपुलेशन में ऑलवेज इफ यू टेक ना, देर आर ऑलवेज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑलमोस्ट 20 to 30% पीपल आर सफरिंग विद स्टोन डिजीज. सो व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स व्हाट आई एक्सप्लेन प्रीवियसली, those things to be prevented. Okay. So if you think the population wise, middle age and elderly people are the most commonly affected. वो लोगों में almost middle age and elderly we can say almost 30 to 40%. But बच्चों में most common क्या है, because of not environmental factors, but because of their genetical condition they are getting affected, or because of the metabolic activities they are getting affected.
So I can say comparatively the stone disease is थोड़ा बड़ा है middle age group and elderly people compared to the children. So इसके लिए actually we have different protocols to evaluate each and every group people, and we accordingly give precautions how they can prevent it and how they can take it to prevent further stone formation. So you mentioned middle age and old people are more prone to this disease. Yeah. Then I want to ask that what are the symptoms a patient will feel? क्या क्या सिम्टम्स रहेगा जिसके साथ वो पेशेंट अस्पताल जाएगा या फिर डॉक्टर को दिखाने के लिए जाएगा? So usually वो patients whatever people coming to our hospital with stone disease ना, उनका main factor पहले बोलते हैं हमको दर्द है, कमर में दर्द है, Okay. which is unbearable. This is the first factor. And इसके बाद पेशाब जाने टाइम में उनका जलन रहते और पेशाब में खून चढ़ने का चांस है, और पेशाब के जलन इसके साथ वो थोड़ा लोगों को इन्फेक्शन ज़्यादा आ जाए तो उनको वो बुखार रहते और थोड़ा वॉमिटिंग्स वो सब होने का चांस है. सो ये 4-5 चीज है. पेशेंट विल कम टू कैजुअलिटी और इमरजेंसी. आई एम प्रेजेंट विद दीज कंप्लेंट्स. सो दीज सिम्टम्स अकॉर्डिंगली देन वी विल जस्ट इन्वेस्टिगेट फर्दर एंड वी विल ट्राई टू सी व्हाट इज द प्रॉब्लम एंड कैसे ट्रीट कर सकते हैं ये लोगों को. ये मान लेते हैं कि एक पेशेंट को क्योंकि हमारे यहाँ में एक ट्रेंड है कि कुछ अगर थोड़ा बहुत दर्द हो रहा है तो हम उसको अवॉइड कर देते हैं, ऐसा होता है बहुत. या फिर फार्मेसी में जाते ओवर द काउंटर कुछ दवाई खरीदते हैं, खा लेते हैं. कुछ समय के लिए वो दर्द कम हो जाता है, हमें लगता है कि ठीक हो गया शायद. तो अगर इसको नेग्लेक्ट किया जाए, ये नेग्लेक्ट की बात हो रही है, तो इसको अगर नेग्लेक्ट किया जाए बहुत दिनों तक तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है? व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस दैट कैन बी देयर? सो व्हाट आई से पर्सनली इज now coming to the educated world and educated people, I advise each and every person not to neglect whatever your symptoms, or don't go over the counter drugs in the pharmacy. Okay, for immediately if you are going it's well and good, but just try to get evaluated and treated accordingly. क्योंकि मेरा almost I have seen more number of cases neglected people for stone disease neglect करके 3-4 साल के बाद वो किडनी का फंक्शन completely जीरो हो जाते. तब हम स्टोन ऑलमोस्ट 1 सेंटीमीटर स्टोन और ऑलमोस्ट 8 mm स्टोन वजह से भी उनका किडनी का फंक्शन पूरे बंद हो जाते. तब हम एक किडनी निकालने का चांसेस ज़्यादा है. सो वी आस्क देम टू अवॉइड ऑल दिस कॉम्प्लिकेशंस. वो किडनी का स्टोन वजह से मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या है? इन्फेक्शन होने का चांस है. सो इन्फेक्शन वजह से एक्चुअली पेशेंट विल बी सफरिंग ए लॉट दैट ही हैज़ टू लूज हिज नॉर्मल एक्टिविटीज फॉर फ्यू डेज. एंड एट द सेम टाइम बिकॉज ऑफ नेग्लेक्टेड स्टोन डिजीज से उनका किडनी खराब होने का चांस है. एंड सो दीज स्पेशली पीपल, क्योंकि थोड़ा लोगों को डायबिटीज और हाइपरटेंशन और ओबिसिटी और थायराइड प्रॉब्लम्स और हार्मोनल प्रॉब्लम्स और कुछ रहे तो वो लोग ना ज़्यादा रिस्क है उन लोगों को. सो स्पेशली पीपल विथ एल्डरली एंड दीज रिस्क फैक्टर्स वी ऑलवेज एडवाइज टू टेक एडिक्वेट प्रिकॉशंस बिफोर गेटिंग इनटू कॉम्प्लिकेशंस. ये कितना डेंजरस हो सकता है? मतलब कैन इट लीड टू द लॉस ऑफ लाइफ? जान जाने की भी खतरा हो सकता है अगर मतलब बहुत दिनों से अगर इसको नेग्लेक्ट किया जाए. Oh, actually patient ना initially when they present actually pain will be the initial symptoms. So initially हम पेन वजह से डायग्नोस किया तो ट्रीटमेंट करने का चांसेस ज़्यादा है. बट थोड़े लोग इनिशियली वो पेन कम होने के बाद उनका फॉलोअप दे विल फॉरगेट टू फॉलो अप इन द ओपीडी. ये लोगों को प्रॉब्लम ज़्यादा है. सो फॉर दोज पीपल आई ऑलवेज इंसिस्ट एक्चुअली वंस योर पेन इज कम्प्लीटेड डोंट नेग्लेक्ट दैट. आप कंफर्म करो डायग्नोसिस से स्टोन बाहर आ गया और उसके ट्रीटमेंट कुछ नहीं चाहिए. Then only patient should be, but still patient should be on follow-up almost 6 months to 1 year because for further stone disease formation. क्योंकि who got stone disease they have frequent habituation of forming stones. So I always ask the patient to keep on regular follow-up. This is the most important what I feel. So you said that once a person gets a stone, so he has a frequent habituation of getting a stone. Yeah. Is this because of his lifestyle? Because he is already eating food that was prone to this disease, and also his physical activities and all that. Is this all of this because like this? Yeah, actually stone disease, as I said, caused by loss of metabolic activity or imbalance of metabolic activity in the body. So some people as I said, they are working based on their working conditions also, they are frequently prone for stone formation. So these people who got stone, definitely they are almost normal people के लिए 30 to 40% what I said. पीपल पहले स्टोन आया ना उन लोगों को ऑलमोस्ट 50 to 60%, ऑलमोस्ट इफ ऐसे अगला
5 years में they have almost 50 to 60% of stone formation, and next 10 years actually what we have know is almost 70 to 80% लोगों को फिर वापस आते स्टोन. सो मेन थिंग इज स्टोन वजह से प्रॉब्लम क्या है, वो किडनी खराब होने का चांस है. सो आवर मेन कंसर्न एज ए यूरोलॉजिस्ट इज टू प्रिवेंट द कॉम्प्लिकेशंस एंड टू कीप द पेशेंट एक्टिव and to prevent any further loss of his kidney or anything. So you said follow-up treatment is very important. So it brings me to the question, what are the treatment options in this? Total treatment option, I'll say. Now, as for the stone disease is common, actually it has become very advanced treatments we have actually. पहले patient they don't have adequacy to get approach to laser treatment. अब तो यूरोलॉजी में लेजर ट्रीटमेंट आने के बाद ऑलमोस्ट स्टोन का ट्रीटमेंट इजी हो गया, क्योंकि इससे कट नहीं रहते, वो ब्लीडिंग नहीं रहते. पेशेंट सर्जरी होने के बाद नेक्स्ट डे ही डिस्चार्ज कर सकते. इसके पहले ऑलमोस्ट किडनी में स्टोन है तो हम किडनी में ऑलमोस्ट होल करके इससे पत्थर निकालने के लिए है. बट हम ऑलमोस्ट नाउअडेज ऑलमोस्ट 40 to 50% ऑफ द पेशेंट विथ किडनी स्टोन्स ना, उनको विदाउट एनी किडनी होल और पंक्चर वी कैन रिमूव द स्टोन थ्रू द नॉर्मल ऑरिफाइस. वो पेशाब के रास्ते से एंडोस्कोपी से जाके वो पत्थर पकड़ के इससे लेजर से ब्रेक करके वो पत्थर निकालने का चांस है. इससे मेन एडवांटेज क्या है, पेशेंट एक्चुअली फ्रॉम नेक्स्ट 2 to 3 days उनका ही कैन गो टू हिज नॉर्मल एक्टिविटीज. देयर इज नथिंग लाइक ही हैज टू टेक रेस्ट फॉर so and so days. So this is the most advantage of the most endourological procedures what we got laser. So laser is very advantage, so which is really helping the patients almost everywhere with stone disease. And the importance of laser is that almost we have treatment for other conditions also. So definitely laser is somewhat boom in urology, what I can say is. So could you please explain how this laser treatment works? I mean, what do you do in that? Could you please elaborate the process? और लेजर से मतलब एक्चुअली वो एक हमारे पास एंडोस्कोपी रहते हैं. वो एंडोस्कोपी ऑलमोस्ट इतने छोटे रहते हैं, ऑलमोस्ट 3 to 4 mm स्कोप रहते हैं. सो इससे नॉर्मल पेशाब के रास्ते से अंदर जाके वो किधर स्टोन है वो पकड़ के हम लेजर से ही कंप्लीट डस्ट करते. वो फ्रैगमेंट मेरे डस्ट, हाँ पूरा डस्ट करने के बाद हम निकालने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो पेशाब के साथ वो भी वापस आ जाते, बाहर आते. सो दिस इज अ गुड एडवांटेज विथ लेजर. एंड एज आई टोल्ड, अभी तो स्कोप्स इम्प्रूव हो गया, क्योंकि हमारा किडनी का पत्थर भी हमारा स्कोप से ही निकाल सकते. पहले किडनी का पत्थर है तो हम किडनी में होल करके निकालना पड़ता और ओपन ऑपरेशन करने से निकालना पड़ता. बट नो एडवांस हो गया, एंडोस्कोप ज्यादा, I mean so much advancement. Even kidney stones also we can remove without any cut in the body. So next thing I want to know, is there any measurement for the stones? I mean इतना बड़ा हो गया तो मतलब मुश्किल है, या फिर इतना छोटा है तो दवाई से हो सकता है उसका, ऐसा कुछ है क्या? Yeah, this is very important question actually. Most of the people उन्हें बोलता है उनका 1 centimeter stone है बट दवाई से निकल गया, बट उनके लिए 3 mm स्टोन है, दवाई से निकल नहीं गया, उनको ऑपरेशन किया. सो दिस इज एक्चुअली पेशेंट से पेशेंट वेरी हो जाते, क्योंकि थोड़ा लोगों को मैं बोलते ना ऑलमोस्ट मिनिमम टू मिनिमम 1 mm स्टोन को भी सर्जरी करना का आवश्यक रहते. सो इसके लिए वी शुड नॉट कंपेयर विथ अदर थिंग्स. एज वी से वंस पेशेंट को इवेल्युएट करने के बाद ऑलमोस्ट लेस देन 1 centimeter स्टोन और 8 mm 7 mm स्टोन्स को ऑलमोस्ट किधर रहे, वो किडनी में है, पेशाब के रास्ते यूरेटर में है, और ब्लैडर में है, किधर है ये देख के so we can advise accordingly. थोड़ा stones ना with medicines only we can cure, there is no need for surgery. so थोड़े stones के लिए हम almost patient को क्यों थोड़े stone के साथ risk factors रहते हैं, वो बोला ना infection के साथ हो जाए तो हम risk नहीं ले सकते. so इन लोगों को ज़रूरत operation पड़ते. so most of the cases I can say almost 20 to 30% of the cases medicine से कम होने का chance है. but the remaining people with stone disease and who have additional risk factor, they should be very careful and accordingly we will treat. That is not like each and every person with stone disease को surgery जरूरी है, ऐसी नहीं है, but we can treat with conservatively with medicine से भी. So the another thing I want to ask, whenever we hear the word surgery, it impacts our brain in a way that after that surgery it's a long and tedious process, and after that surgery we'll have to take a long amount of rest, and as you said, we cannot go back to our daily lives in a quick way. So if we talk about the recent advancements, you mentioned laser treatment, which is you said boon to this urology. So if you compare the
older treatments and this new treatment, advanced treatment that we have now. So what are the differences, major differences? One thing you mentioned, of obviously the rest time is reduced. Another thing, could you please elaborate in that difference? Yeah, thing is actually previously almost 10 years before, if you can see, or 10 साल के पहले almost endoscopies are of big size actually. So it was difficult to treat each and every case with endoscopy. So that time हम काट के वो stone निकालना पड़ता that time. So whenever we cut the body na, I mean whenever we do open surgery, patient will be requiring so much of time to recover. To heal, It can be almost 1 week, 2 weeks, some people will require almost 1 month also. So that is the main disadvantage of open surgery. But I won't say completely, अभी भी थोड़ा procedures के लिए, I mean थोड़ा cases के लिए open surgery जरूरत है. But now almost because of the advanced endoscopes and laser what we got today, I can say almost 60 to 70% of the cases, even more than 70, I say up to 80% of the cases, we can manage with endoscopically. The advantage to the patient with this is actually, as I said, patient morbidity or hospital stay completely it will come down. Open surgery किया तो almost 1 week तक hospital रहना पड़ता, but with endoscopy एक दिन में थोड़े लोगों को almost morning करके evening को discharge करेंगे. ये तो बहुत advantage है. And one more good thing is actually वो हॉस्पिटल में डिस्चार्ज होने के बाद वन पेशेंट फील्स फिट, ही कैन गो टू द ड्यूटीज और एनीथिंग हिज वर्क विद इन द नेक्स्ट 2 to 3 days. So this is the very good thing which with regard to the patient and the advance in the endoscopy urological procedures. So if we talk about the cost, is there any significant changes in the cost in the old treatment and the new treatment? Is there any difference, huge difference is there? Cost is not only about the money we give to the procedure, actually the patient lost his work duties also very important, what I Yes, feel definitely. is, because some open surgery kiya to patient almost will stay in 1 month at the home and he will lost his work and everything. Yes. And recovery will be late. But I can say now because of the advanced endoscopic procedure, definitely the cost of the surgery has increased definitely. But ultimately the patient is one who is going to be benefited with this. In the long run, yeah. Yeah, in the long run patient will be benefited, and main thing is his quality of life is not going to alter. His quality of life will be preserved and immediately he will retain his activities. With the open type of surgery there are so many complications, like he may lose blood loss and he may require blood transfusions. At the same time there are high chances of infections with open surgeries, and at the same time patient will take so much of time for recovery, what I mentioned like. So there are definitely, we have to balance between the both cost in sense in between the not only the surgery cost but with the patient how he is going to recover and his morbidity, everything we take into consideration. But definitely the cost of procedures have increased comparatively, I can say. Okay. So I think this is the question I am going to ask is a very important question. How can we prevent this stone formation? Yeah, this is very important question. Almost each and every patient we explain this. कभी ओपी को आते हैं और ऑलमोस्ट स्टोन डिसीज ट्रीट करने के बाद ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी पेशेंट फ्रॉम माय साइड व्हाट आई एक्सप्लेन, आई टेक आस्क देम टू टेक ओनली 3 to 4 precautions. One is get hydrated regularly, hydrated. Take every hourly 1 or 2 glasses of water, which is most important actually, not only from the pass of stone, but this is with regard to overall general fitness of the body. So hydration is very important for our body. And the next thing is I ask them to take the balanced diet. This is most important. And the third thing is patients should avoid taking salty foods. Salty matlab there are where most of the foods are preservatives which are added with salt. So these foods should be avoided, and these are one of the big culprits what I can say for the formation of stone disease. And at the same time patient should not gain his weight, he should maintain his physical activity. These 3 to 4 factors, if patient is able to take care, definitely I can say there are almost 50 to 60% of the chance that he can prevent the stone formation. And along with this, one more thing is patient should not neglect his previous stone. If patient is known that he has previously stone disease and which was very small, just take an ultrasound after 1 year or 6 months, so that if the size is small and if it is passed out, it's well and good. But don't neglect. If you have the stone, just keep in follow up with the doctor. These are most important advice what I give to the patients. So you mentioned that follow-up treatment is very important. So how frequently do we need to visit the doctor? So as far as surgery होने के बाद actually within 1 month we will ask him to come 1 or 2 times. इसके बाद 6 months के बाद एक बार स्कैन करके देखेंगे, और afterwards every yearly once is more than sufficient. But patients who are known case, उनको पहले ही मालूम अंदर एक पत्थर है बट इसको ट्रीटमेंट ज़रूरत नहीं है,
देन उन लोगों को मैं बोलते हैं ऑलमोस्ट 6 months to 1 year कभी भी डॉक्टर के पास जाओ, एक बार स्कैन निकालो और कुछ प्रॉब्लम है तो डॉक्टर का एडवाइस ले लो. दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. दिस इज द फॉलो अप, दैट्स ऑल. देयर इज नो स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस, बट एज पर द डॉक्टर एडवाइस कीप फॉलोइंग विद द डॉक्टर सो दैट यू कैन प्रिवेंट योर morbid life or any major complications later. So, if you advise one patient to take medicines, let's assume that his stone size is not that much, and you have diagnosed him that you will do with medicines only. Then, how much is the amount of time he must take medications? Is there any case to case specific? Is there or? Yeah, good thing actually. This is thing like it varies from patient to patients. Patients who have some congenital abnormalities with stone formation, we have to correct it with surgery or what something. And some patients usually where they are prone for metabolic activities. Some patients के लिए हम uric acid level ज़्यादा है तो for them until the uric acid level comes to normal, we have to give treatment. These people will be requiring most of the treatment for long time. And थोड़े लोगों को actually because of infections, frequent recurrent infections से stone form होने का chance है. So उन लोगों को also we need to give him treatment for long time with at least maintenance antibiotics. So it depends from varies to patient to patient. So accordingly we will treat. So now I want to ask, ILS hospital we have here. So what are the treatment facilities that are available here in ILS hospital? So good thing is actually ILS hospital we have main thing is as far the urology department is concerned, we are going to get advanced with laser endoscopic surgery because we are going to get almost 60 watts laser, which is high frequency laser, which is going to be almost most of the stones, 80 to 90% of the stones we can treat endoscopically without any surgery. That is one good thing. And we have miniaturization of the scope. We have scopes from almost small size to bigger size, where there is no there is nothing to postpone our surgery for next sitting. This is one more thing. And at the same time almost we have all radiological facilities which can help us in doing surgery better compared to people where we don't have interventional radiological procedures. This is one good thing. And at the same time we have intercommunicational departments. We have good anesthesia team backup which can help us in doing surgery better. And at the same time we have other cross consultations. So overall, as we have the complete team of almost each and every department, so I think as per the urology department we have well sophisticated department with all endoscopic and laser facilities where we can treat almost each and every stone disease as per minimizing the complications or without any complication to the patient. So if a patient comes with you with all the symptoms, you are going to operate on him, and after that the follow-up treatment which you mentioned, if anything emergency comes on, how will you treat a patient who has already been operated on and he is facing some complications or difficulties? How will you treat him then? What do you think? So as like I said, each and every stone patient doesn't need surgery, but after stone surgery patient has any emergency, we have emergency team backup which are working for 24/7. They are available almost 24 hours and it is supported by almost all the departments like critical care team and radiological department and other medicine and surgical department. So whenever the patient needs surgery in emergency, or when patients, most of the times patients can be treated conservatively with treatment that we will take care. But some patient may come in acute renal failure where he may have bilateral stone disease or because of obstruction. That time we need to treat emergentically. So we have, since we have the facilities with anesthesia backup every time, any emergency can be treated anytime, even by 24/7 like. ओके हमारा मतलब अभी समय एकदम समाप्त होने वाला है. लास्ट में ये आपसे बोलना चाहूँगा कि हाउ विल यू समराइज आवर कन्वर्सेशन, व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स to prevent this urinary stone disease? Okay, so thing is actually urinary stone disease is most common, as I said, can occur in almost all age groups. I request all persons, known to be diagnosed with stone disease, please don't neglect your stones and get ourselves complicated. So take a treatment adequately with a concerned doctor and follow his advice so that without any morbidity and mortality वो थोड़ा कम हो करके we can treat him accordingly. And main thing is follow the precautions what I have told. And at the same time main thing is as far as I said, where you have the precautions and where you can take the precautions adequately and where you have all the facilities, you can undergo procedure easily in a convenient way and recover early. So this is what my advice is.
থ্যাংক ইউ সো মাচ ডক্টর ফর গিভিং আস ইউর টাইম। আপনারা দেখলেন আজকে যে ইউরিনারি স্টোন ডিজিজ কি জিনিস এবং এটাকে কিভাবে প্রিভেন্ট করা যায়, এই গোটা বিষয়টাই কিন্তু আজকে আমাদের জানালেন ডক্টর এ সন্তোষ কুমার, যিনি সিনিয়র কনসালটেন্ট ইউরোলজিস্ট অ্যান্ড অ্যান্ড্রোলজিস্ট আইএলএস হাসপাতালে। এবং অবশ্যই ডাক্তারবাবু যে কথাগুলো বলেছেন অবশ্যই আশা করব আমরা যে আপনারা অবশ্যই মেনে চলবেন এবং আমরা একটা সুস্থ স্বাভাবিক জীবন যাতে কাটাতে পারি সবসময়। আজকের এই বিশেষ টক শো এই পর্যন্তই। পরবর্তী লেটেস্ট নিউজ ও আপডেটস দেখতে শুধুমাত্র চোখ রাখবেন নিউজ ভ্যানগার্ডের পর্দায়। নমস্কার।